Students, we are going to start chapter 1 of macroeconomics, basic concepts. First, we have meaning of goods. Now, goods are the things which satisfy human wants directly or indirectly. Clear? Then we have types of goods. Types of goods may first we have consumer goods. Now, what are consumer goods? Consumer goods are those goods which satisfy the wants of the consumers. जो हमारे वांट satisfy करती हैं. Three types. One is single use. Second is durable use, and third is semi-durable. Single use consumer goods means which can be consumed only once, one time use. As in fruit, vegetable, milk, bread, etc. One time use. Durable use can be used for long period. That is TV, car, scooter, fridge. Then we have semi-durable, which can be used for a year or slightly more than a year. यानी एक साल से ज्यादा. एग्जाम्पल इसका है शूज, क्लोथ्स, क्रॉकरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. तो ये थे हमारे कंज्यूमर गुड्स. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव producer goods. Producer goods are those goods which help in the production of consumer goods. यानी जो consumer goods के production में help करते हैं. ये भी दो तरह के होते हैं. One is single use, other is durable use. Single use producer goods means which can be used only once in production process. For example, raw material. That is sugarcane for sugar industry. Sugarcane for sugar industry. And jute for jute industry. Then we have durable producer goods. These are the goods which can be used for long period in production. Example, machines, tools, implements, etc. Clear? Now, producer goods are also known as capital goods. Now, what are capital goods? इसके लिए first of all you must know the meaning of capital. Now, what is capital? Capital means anything which helps in further production is known as capital. जो भी चीज आगे हेल्प करे प्रोडक्शन में वो काम कर उसको कहते हैं कैपिटल. जैसे हमारी आंखें कैपिटल है, आंखें हेल्प करती हैं देखने के लिए. हाथ कैपिटल है, हेल्प करता है राइटिंग के लिए. टांगे हैं कैपिटल है चलने के लिए. माइंड कैपिटल है, वो क्या होता है सोचने के लिए, लिखने के लिए. तो ये ऐसे ही. But all capital goods are producer goods. All capital goods are producer goods, but not the other way. That is, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not कैपिटल गुड्स. क्योंकि कैपिटल गुड्स में वी ओनली इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स वन टाइम. रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, एयरवेज, ऑल दीज. आई टोल्ड यू कैपिटल में माइंड भी है हमारा, लेग भी है, हमारा हार्ट भी है, सब भी कैपिटल है.
इसलिए मैंने कहा all capital goods are producer goods. That means mine can be used for production, but all producer goods are not capital goods. That means because capital goods include fixed asset, mind is not, hand is not fixed asset. जैसे बड़े होते चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज है. These are producer goods. Next type of goods we have intermediate goods and final goods. Intermediate goods and final goods. Intermediate goods and final goods. So what are intermediate goods? Intermediate goods are those goods which are used for further production. And what are final goods? Which are used for consumption and investment purpose. जैसे ये पेन है, अगर पेन मैं यूज कर रहा हूं तो कंजम्पशन के लिए, अगर दुकानदार ने खरीदा इंडस्ट्री से आगे बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस. सेकंड, इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी रीसोल्ड और फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड. कस्टमर विल आस्क कि भाई फाइनल गुड्स तो हम रीसोल्ड कर सकते हैं, जैसे स्कूटर है, टीवी है, कार है, फ्रिज है. तो यहाँ का मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, कैन बी रीसोल्ड मतलब क्या है कि व्हेनेवर यू आर सेलिंग एनी, फॉर एग्जांपल टीवी मैंने बेचना है, व्हेन आई विल सेल द टीवी, am I getting any bill for that? No. When I am not getting bill for that, that is known as first good. Its value will not be included in domestic income या national income. So अब intermediate goods क्या है? For example, I give example of sugar cane. Now sugar cane is sold by the farmer. For the farmer it is a final good, but for sugar industry it becomes intermediate. That means sugar cane will be used by the farmers to produce sugar. Third point, intermediate goods are inside the production boundary. Inside the production boundary. और यहाँ पर क्या है? Final goods are outside the production boundary. Now students, I will let you know the meaning of production boundary इसके बाद, ठीक है? Fourth point, intermediate goods value not included in domestic income and national income. इसमें क्या है? Value included in domestic income and national income. For example, I give you example of sugar cane. Now when sugar cane is used for producing sugar in sugar industry, जब हम चीनी बेचते हैं तो चीनी में ऑटोमेटिकली गन्ने की वैल्यू इंक्लूडेड है, हम उसकी वैल्यू प्राइस नहीं लाते. तो ये मतलब कहने का. नेक्स्ट भी है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. ना प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? इट इज एन imaginary line around producing sector inside which we have intermediate goods and outside final goods. ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, अंदर इंटरमीडिएट गुड्स है, बाहर फाइनल गुड्स है. इज एन इमेजिनरी लाइन. फॉर एग्जांपल जहां पे कार बनती है, जो कार की इंडस्ट्री है उसके अंदर रॉ मटेरियल है हमारा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया. जब कार बन के तैयार हो गई, इट बिकम्स फाइनल गुड्स. ठीक है बेटा? अच्छा जी.
Next we have meaning of resident. Now student, what is resident? A resident is a person or an institution. It can be a person or an institution whose center of interest lies in that country in which he lives or where it is situated. Lives is for person and situation is for institution. Resident is a person or institution whose center of interest lies in that country in which he lives or where it is situated. Now, institutional examples, for example, institutional example है WHO, World Health Organization. इसका head office Geneva में है, but if any person is working in this WHO office, he will be the resident of that country to which he belongs. For example, an Indian working in WHO office in Delhi is a resident of India. Why? इसमें याद रखो, अगर आपसे पूछते हैं रेजिडेंट क्यों है, ये चीज आएगी बेसिकली सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई करता है इसका। हाँ, जो पाकिस्तानी अगर काम कर रहे हैं में कहाँ रेजिडेंट होगा, पाकिस्तान का, क्योंकि सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को लाई करता है पाकिस्तान में। यानी रेजिडेंट के रीजनिंग के लिए आपने ये वर्ड यूज करना है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा? अच्छा, नाउ देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन रेजिडेंट्स। पहला, फॉरेन विजिटर्स, जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स घूमने आते हैं, आगरा ताजमहल देखने, डलोजी, मनाली, चंबा जाते हैं, वो कहाँ रेजिडेंट होंगे? जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। देन स्पोर्ट्स पर्सन्स, जैसे बाहर की टीमें हमारे इंडिया में खेलने आती हैं, वो कहाँ रेजिडेंट होंगे? वो जिस कंट्री से वो आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में आई है क्रिकेट खेलने के लिए, तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स होंगे वो कहाँ के रेजिडेंट होंगे? वो रेजिडेंट होंगे जिस कंट्री के जहां से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वाले करता है। देन थर्ड वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज WHO, IMF, ILO. These are the resident of international area. WHO है, IMF है, International Monetary Fund, International Labour Organization. That means these are being developed, established for the betterment of full world, not a particular area, particular country. ठीक है बेटा? Resident of international area. But the people working in these organizations will be the resident of that country to which they belong. Fourth point, border workers crossing the border daily to work will be the resident of that country to which they belong. For example, Indians जाते हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, हफ्ते बाद इंडिया वापस आ गए, तो वो कहाँ रेजिडेंट होंगे? इंडिया के रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लाई करता है। ठीक है बेटा? ना इसके बिसाइड वी हैव so these are the things which are not included in resident. पहला foreign visitors, sports persons, international organizations and border workers. Clear students? So this was regarding the center of interest, so meaning of resident. So next we have meaning of domestic territory. Now general meaning is geographical or political boundaries. But in economics, it also includes the following. Pehla, political frontiers including territorial waters. Political frontiers including
टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि जैसे हमारा होता है ना भाई, ईस्ट में ये, वेस्ट में ये, नॉर्थ में ये, साउथ में ये। पहले जनरल मतलब क्या है कि भाई जमीन के बेस पर होता है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल मुंबई जो है वो हमारा अरेबियन सी में बना है। अरेबियन सी जो है, अरब नाम तो अरब है, बट इट इज नॉट दैट कि उसमें अरब का अधिकार है। कुछ एरिया तक वहां पे इंडियंस का भी अधिकार है। जिस तरह से जमीन पे एरिया बांटा हुआ है उस तरह से समुद्र में भी एरिया बांटा हुआ है। नेक्स्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स between two countries. Now, for example, Indian planes flying between Japan and China is a part of territory of India. जो बेशक जहाज इंडिया का है, इट इज फ्लाइंग बिटवीन जापान एंड चाइना, तो इंडिया टेरिटरी का पार्ट हो। क्यों? घूम फिर उसने कहां पे आना है? इंडिया में ही आना है। देन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स अब्रॉड। हाँ बेटे, इसमें हमें ध्यान देना है। जिस कंट्री की एम्बेसी होगी ना, जैसे इंडियन एम्बेसी है, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, जापान में, रशिया में, चाइना में, पोर्चुगल में, स्पेन में, कहीं भी हो, तो वो किसका पार्ट होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगर यूएस एम्बेसी वर्ल्ड में कहीं भी है, जापान में, चाइना में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इट इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ यूएसए। ठीक है बेटा। देन फोर्थ, fishing vessels, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated in international waters. Now, what are rigs? Rigs means wells, कुएं। मतलब एग्जांपल दिया था, जैसे अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कुछ एरिया दे दिया इंडिया वालों को कि भाई अपने इतने एरिया में ही फिशिंग कर सकते हो, या तेल निकालना तेल निकाल सकते हो। तो ये है, these are the four components of domestic territory of a country. ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, तो हम लोग इतना करते हैं आज इस चैप्टर में। बाकी मैं आपको इसका सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।